This call is now being recorded. Now, how many girls? Very less girls. Please come fast. Tell others to come fast. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Now it is 11 o'clock. Ninth chapter we have finished. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am, we have finished. 10 we have to start, no? Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Take out your maths books and copy. Properties of triangle. Keep ready with your pencil, scale, and rubber. Ma'am, please wait for me. Namaste. Good morning, ma'am. Good morning. I'm waiting for 2-3 minutes. 3 minutes, then I'll start the class. Wait for others. Good morning, ma'am. Good morning. Don't Good unmute morning, yourself. ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Morning, ma'am. Good morning. Good morning. How are you, ma'am? Fine, bacha. Good morning, ma'am. Mute yourself. Yes, yes. Good morning. Mute yourself. Nobody will unmute. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Okay, I'll start the class. Good morning, Yes, everyone. ma'am. Yes, Good morning. ma'am. Now, okay, mute yourself. New chapter is properties of triangles. Triangle, there are three angles in a triangle, and the sum of three angles of a triangle is 180 degree. 180 Okay, degree. this we have studied. Don't ask, tell in between. Only mute yourself and listen carefully. And if you want to write, so write down, copy down in your copy the important points. So in this triangle, what is triangle first? A triangle is a closed figure formed by three line segments. There are three line segments which form a triangle. If I write in a triangle ABC, so what are the line segments? AB, AC, and BC. These are the three line segments, and line segments who has the two end points. That's why we said that triangle is made up of three line segments. Okay, and here there are, and in triangle there are three sides and three angles, and the sum of three angles is 180 degree. Okay, now next is
I start the screen. Okay, in triangle, this is triangle. In this is angle A, this is angle B, and this is angle C. Angle 1, angle 2, angle 3. So I write angle 1, 2, angle 3 is equal to 180 degree. And what is our reason? This is angle sum property. Angle sum property. Or we can say it, sum of three angles of a triangle is 180 degree always. Clear? This is the first property of triangle. Okay. Next is, this is a triangle. This is a boundary of the triangle. This is a boundary of the triangle. This is the interior part. Which part? Interior part. And this is the exterior part. Exterior means outside part. Exterior. Okay. If any point is on the boundary, so we said that it is on. ये आ गया on the boundary. Boundary के ऊपर है. ठीक है. For example, if I draw a triangle, I have to write. Suppose I write here M, here on N, O, P, Q, Y, Z. Okay. So in this triangle, in this question, which are the points on the boundary of the triangle? Which are the points? N. Ma'am, M, M, N, N, A, B, O. C. Ma'am, M, N, ma'am, O. And O. Okay, A, B, C also, because these are the points. These are on the boundary. Okay, these are on Okay, the ma'am. boundary. Which are Boundaries. exterior points? Exterior Z. points. And Z and Y. Y Ma'am, Z and Y. Z. Y and Z. Y Okay. and Z. Which are on the interior? Ma'am, P and Q. P and Q. P and Q. P and Q. Okay, understood? Yes, ma'am. Okay. Next is, mute yourself now again. Now listen very carefully. Now the next topic is types of triangle. You have to listen very carefully. Not types of triangle. There are two types. First is on the basis of sides. Mute yourself. On the basis of sides. ठीक है. और दूसरा है on the basis of angles. Triangles we classify into two things, sides and angles. हम triangles को classify किस में करते हैं? दो चीजों में, एक sides में और एक angles में. ओके, सो हम कैसे करेंगे? साइड्स में कौन कौन सी ट्राइंगल आएंगी और एंगल्स में कौन कौन सी ट्राइंगल आएंगी, अब हम देखेंगे. देखो, फर्स्ट है साइड्स. साइड्स में आती हैं आपकी थ्री ट्राइंगल्स on the basis of sides. First is equilateral triangle. Equilateral means all sides equal. लिखते जाओ. Equilateral means all sides and angles are equal. हर चीज equal. Every side and every angle. All the three angles are equal and all the three sides are equal. That is called equilateral. Equal. इसी से equilateral equal से बना है. So remember in your mind,
Equilateral triangle means all the sides and angles are equal. Ma'am, your voice is not coming. Now here equilateral triangle means it is not equal. Mute yourself. Mute yourself. So equilateral triangle made up of word equal. Okay, is equal means all the sides and angles are equal. Remember, second is isosceles. Second is isosceles. Isosceles means two opposite sides. लिखो, two opposite sides are equal. Two opposite sides and angles are equal. आइसोसेलेस में ये ट्राइंगल है, सिर्फ ये दो एंगल्स और ये दो साइड ही इक्वल होते हैं. सो टू ऑपोजिट साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल. थर्ड साइड और थर्ड एंगल इक्वल नहीं होता. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज आइसोसेलेस ट्राइंगल. इक्विलेटरल आप बना सकते हो, ट्राइंगल बना के तीनों एंगल्स को ऐसे करो और ऐसे कर लो, एक एक लाइन लगा लो. Means all the three angles and all the three sides are equal. But in isosceles, two angles are equal. Two angles are equal and opposite two sides are equal. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Yes, Third ma'am. is चलो. Third is scalene. Scalene triangle. Scalene triangle means in this all the three sides and angles are different. ये तीनों एंगल और तीनों sides means this is 4, this is 6, this is 10. All the three angles and all the three sides are different. This is called as scalene triangle. No angle is equal and no side is equal. Is it clear? This is scalene triangle. First is equilateral, second is isosceles, third is scalene. Equilateral, all equal. Isosceles, two sides are equal. Scalenes, no side and no angles are equal. Nothing is equal. Is it clear? All the three Yes, ma'am. triangle? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. And everything is written in your book. Afterwards, you read that. First, only see on the board. Don't see in your book. Afterwards, after my class, then you see in the book and read everything. Next is, second type is on the basis of angles. Triangles on the basis of angles. Again, three triangles are there. First is acute. Acute angled triangle. Acute angled triangle. In acute triangle, your triangle is like that. Means all the three angles are acute. We are not talking about sides here, because now we are talking about only angles. So here, all the three angles are acute. Ma'am, your voice is not coming. My voice is clear. Please check your connection. Acute angled triangle. Here, all the three angles are acute. Acute means less than 90. Less than 90 degree. 90 degree आपको ऐसे होता है. So this is 90. So सारे जो angles बनेंगे आपके 9, ये आपका base angle, सारे आपके 90 से छोटे बनेंगे. So ये भी आपका 90 छोटा है, ये भी 90 छोटा है. This is your baseline. Is it clear? So all the angles are acute. Less than 90 degree are called acute angled triangle. Is it clear? 90 degree से तीनों angles छोटे होने चाहिए.
30 degree, 40 degree, 50 degree, like that. 80 degree, 85 degree, 89 degree, till 89 degree. 89 is also smaller than 90 degree. Okay, so 90 degree से छोटे आपके होने. और एक चीज और, listen, three angle, the sum of three angles is always 180 degree. Always. If the sum is less than 180 or more than 180, it is not a triangle. Only 180 degree will be a triangle. Is it clear, all of you? Yes, ma'am. Good. Yes, ma'am. Now, acute Yes, angle ma'am. triangle is all the angles are acute, means less than 90 degree. जो मैं बोल रही हूँ लिखो उसको साथ साथ में, शॉर्टकट में अपने पास लिखो, बहुत जरूरी है. Please mute yourself. Second is obtuse. Who is unmute? Ma'am, Geetanjali. Ma'am Gitanjali. Please don't unmute yourself. Obtuse angled triangle. Obtuse angled triangle. Your triangle is like that. Means one angle is obtuse. आपका एक एंगल क्या है? Obtuse. One angle, write down. One angle is obtuse and other two angles are acute. ये आपके acute angle है. These two are acute because these two are less than 90 degree. But one angle is obtuse. This is more than 90 degree. ये आपका more है, more than 90 degree. Okay, so this is obtuse angle triangle. So definition क्या बनेगी इसकी? In obtuse angle triangle, one angle is obtuse and other two angles are acute. One angle is obtuse and other two angles are acute. Is called obtuse angle triangle. Clear? Obtuse means Yes, ma'am. obtuse means more than 90 degree. More than. और एक ट्राइंगल के अंदर एक ही ऑब्ट्यूज हो सकता है, दो ऑब्ट्यूज नहीं हो सकते. इफ आई ड्रॉ like this is obtuse angle, this is obtuse angle, is it a triangle? No, ma'am. No, ma'am. No. No. So we cannot draw in a triangle two obtuse angle. Only acute angles are possible. Only three angles are acute are possible. No obtuse, only one obtuse angle is possible. Okay. So in a triangle, only one angle is obtuse, called obtuse angle triangle. Now third type of triangle is right angle triangle. Your diagram is like that, right angle. Okay, this is your 90 degree. This is your 90 degree means only one angle is right. Only one angle is right. And other two are A and C angle are acute. These are acute. Clear? In right angle triangle, only one angle is right angle, means of 90 degree, and other two are acute. Two right angles are not possible. If I draw these two right angles here, is it a triangle? No, ma'am. No, ma'am. So it is not possible to make a two right angles in a triangle. So only we make one right angle. Okay, so if the one angle is of 90 degree, so we called as right angle triangle. Please mute yourself. बेटा आपकी वजह से दूसरे बच्चों को सुनाई नहीं देगा. Don't unmute. So right angle triangle, only one angle is of 90 degree. Is it clear? Yes, ma'am. Any doubt? Ma'am.
No, No, ma'am. ma'am. No, No, ma'am. ma'am. No, ma'am. No, Very No, good. ma'am. ma'am. No, ma'am. No, Now ma'am. listen No, here ma'am. again. Now listen No, here ma'am. again. So, how many types of triangle? Two types. How many types? Two types. First is on the basis of sides. On the basis of sides, how many triangles are there? Three. Ma'am, three types. Yes, Ma'am, equilateral, is there isosceles, scalene, Isosceles and and scalene. scalene, yes, isosceles, and and scalene. scalene, Scale. Second is on the basis of angles. Please mute angle, yourself. Mute Acute yourself. angle. Acute, Acute angle. obtuse, and Use right. and right angle. Right angle. Right angle. And right angle. Okay, क्लियर. सो आपने इन तीनों टाइप्स की ट्राइंगल्स को, आपने 6 टाइप्स ट्राइंगल्स हैं, ये आपने दिमाग में अच्छे से रखनी है. इनकी डायग्राम कैसे बनती है, यू हैव टू राइट. ठीक है. ओके, द नेक्स्ट इज व्हाट आर मीडियंस. नेक्स्ट टॉपिक इज मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल. मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल. एक ट्राइंगल ड्रॉ किया मैंने, ठीक है. इसका मैंने मीडियन, यहां से एक मैंने मीडियन, एक मिनट, इसका मैंने यहां से मीडियन ड्रॉ कर दिया, ये ड्रॉ कर दी, यहां से मैंने ये ड्रॉ कर दिया, ये यहां से यहाँ ड्रॉ. मतलब मैंने बोला विच इज अ मीडियन. मीडियन मीन्स मिड पॉइंट. ये लाइन है आपकी, ठीक है. जितने सेंटीमीटर की लाइन होगी उसका मिडल नंबर. मीडियन मीन्स द मिड पॉइंट. क्या बोलते हैं इसको? मिड पॉइंट मीन्स बीच का नंबर. जो बीच का नंबर होगा दैट इज योर मीडियन. मीन्स दिस लाइन इज कॉल्ड अ मीडियन. ठीक है, ये ट्राइंगल का मीडियन है. जैसे मैंने एक ड्रॉ की ऐसे ट्राइंगल, मैंने ऐसे ट्राइंगल ड्रॉ की, तो मैंने ये लाइन लगा दी, ये लाइन लगा दी, ठीक है. सो दिस इज अ मिड पॉइंट. D is a midpoint of a triangle. और अगर मैंने यहां से ऐसे लगाई, ये मैंने लिखा E. E is the midpoint of this line. D is the midpoint of this line. और अगर मैंने यहां से ऐसे लगा दी, this F is the midpoint of this line. Okay, midpoint means the middle point. Midpoint of a side of a triangle is called a median of the triangle. ठीक है, मीडियन समझ में आ गया. मीडियन मीन्स द मिड Yes, पॉइंट. ma'am. ओके, Yes, ma'am. ओके, yes, ma'am. गुड. नेक्स्ट इज एल्टीट्यूड्स. एल्टीट्यूड्स, एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल. एल्टीट्यूड क्या होता है? ये देखो, अगर मैंने आपके एक ट्रायंगल बनाई, ये मैंने लाइन लगाई, ठीक है. आप बोलोगे मैम ये तो मीडियन हो गया. कैसे? नहीं, मीडियन नहीं हुआ. ये देखो, ये साइड छोटी है, ये साइड बड़ी है ना. और ये जो मैंने लाइन लगाई, ये मेरी होगी 90 डिग्री की. मीडियन जरूरी नहीं है 90 डिग्री का हो, बट एल्टीट्यूड ऑलवेज, लिख लो, एल्टीट्यूड इज ऑलवेज ऑफ 90 डिग्री. ये जो आपका सीधी लाइन लगी है, ये आपकी 90 डिग्री की होनी चाहिए, स्पेशल. इसलिए हम इसको कहते हैं एल्टीट्यूड. ये क्या कहते हैं हम इसको? एल्टीट्यूड. अगर मैं यहां से ऐसे लगा रही हूं और पर यहां पे मैंने साइन लगा दिया ऐसे 90 डिग्री का, ये वाला जो बॉक्स बनाते हैं ना हम, ये 90 डिग्री का साइन होता है. इस पे लिखें चाहे नहीं लिखें, जहां पे ये बॉक्स नजर आएगा, इट मींस दिस लाइन इज ऑफ 90 डिग्री. परपेंडिकुलर, इसे दूसरा वर्ड कहते हैं परपेंडिकुलर. मींस दिस लाइन इज परपेंडिकुलर ऑन दिस बेस लाइन. ओके, this standing line is perpendicular on this baseline. So this is your perpendicular line. अगर मैं यहां से आपकी लाइन यहां लगाती हूं और मैंने ये साइन ऐसे लगा दिया, इट मींस दिस इज ऑफ 90 डिग्री. ये 90 डिग्री की लाइन जा रही है ऑन दिस बेस लाइन. क्लियर? सो दिस इज ऑफ 90 डिग्री. सो एल्टीट्यूड इज ऑफ 90 डिग्री. 90 degree. Yes. Vertex of a triangle to opposite side such that line segment is perpendicular to the opposite side. This line segment is perpendicular to the
opposite side. So it called as altitudes of a triangle. So how many altitudes we can draw? 3 altitudes. A triangle has 3 altitudes from each vertex. एक ये vertex क्या होता है? ये होता है vertex. ये होता है vertex. ठीक है, इस vertex से एक altitude हमने ये खींचा. इस ये हो गया vertex A, vertex B, vertex C. vertex means जो कॉर्नर होता है जहां दो लाइन सेगमेंट्स आपस में मीट करती हैं, जैसे ये और ये. ठीक है, तो ए वर्टेक्स से ये एल्टीट्यूड खींचा हमने, बी एल्टीट्यूड से हमने ये वाला बी वर्टेक्स से ये वाला एल्टीट्यूड खींचा और सी वर्टेक्स से ये वाला एल्टीट्यूड खींचा. इज इट क्लियर? समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, same as median. A triangle has 3 medians from each side. And altitude again, we can draw 3 altitudes from each vertex. Okay? ये छोटी छोटी चीजें हैं, प्लीज ध्यान में रखना, इसके ऑब्जेक्टिव बनते हैं. ओके, नाउ एक्सरसाइज 10.1 देखो. Question number 1. Look at the following. Look at the triangle. Your triangle is like that. This is R, S, T. Your A part. Side opposite. Your question is look at the given triangle and name the following. आपको नाम लिखना है, ठीक है? Side opposite the vertex R of triangle RST. RST में वर्टेक्स R है. इस R के अपोजिट कौन सी साइड है? साइड अपोजिट कौन सी साइड है? ST. ये वाली. यस, आप लिखोगे साइड ST. नो SNT नहीं आएगा. साइड है, 2 अल्फाबेट आने चाहिए इकट्ठे. ST, नॉट SNT. I'm side ST. यस, साइड ST. साइड ST लिखते जाओ साथ में. बी पार्ट. मैम हम बुक में लिख ले. हाँ, लिख लो. एंगल, डू इन बुक. एंगल ऑपोजिट टू द साइड ST. ST के ऑपोजिट एंगल कौन सा है? Angle एंगल R. एंगल का साइन बनाओ. एंगल R. Angle SRT. आप सिंपल लिखो एंगल R. SRT लिखोगे आप, एंगल R. C, vertex opposite to the side RT. RT S. क्या होगा? Vertex S. Yes, vertex Vertex S. S. Vertex S. S बड़ा बनाना अलग से, capital letters. Is it clear to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. मैम ये वाला क्वेश्चन बुक में करना है. हाँ जी, बुक में कर लो. जो आप बुक में कर सकते हो बुक में कर लो. छोटे छोटे जो सिंगल आंसर लिखने जैसे ये वाले, बाकी अपने हर क्वेश्चन अपने कॉपी पे करना है. ओके मैम. ना म्यूट योरसेल्फ. गीतांजलि अपने आप को अनम्यूट मत करो. क्वेश्चन नंबर 2. ड्रॉ अ ट्राइंगल PQR. ओके, वी ड्रॉ द ट्राइंगल PQR. ये कॉपी पे करोगे आप, PQR. ठीक है. मार्क द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग ऑन PQR. ओके, अब हम मार्क करेंगे. कैसे करने मार्क? A पॉइंट. 3 पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल. इंटीरियर मतलब अंदर. 3 पॉइंट्स अंदर ड्रॉ करो. हमने कर दिए A, B एंड C. डॉट A, डॉट B, डॉट C. तो हमने इसमें इंटीरियर में क्या नाम लिख दिए? A, B, C. Now 2 points on the boundary of a triangle. Okay, बाउंड्री पे हमने एक कर दिया M और यहां कर दिया हमने बाउंड्री के ऊपर N. तो हमने B का आंसर लिख दिया बाउंड्री पे M and N. Okay, then 3 points in the exterior of the triangle. Now exterior पे कर दो यहाँ पे X, यहाँ कर दो दूर Y, यहाँ कर दो दूर Z. Okay, C point exterior. So हमने किया X, Y, Z.
एक्सटीरियर. इज इट क्लियर? जो आपने डायग्राम में शो करना है वही आपने लिखना है. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So you can write any alphabet. Only the triangle name is PQR. Okay, don't change the name of the triangle which is given in the question. If it is not given, then you can take any alphabet, any type of triangle. But when you draw a triangle, always write the name of a triangle first. ट्रायंगल को कभी भी खाली मत छोड़ो. जब भी कोई एंगल बनाना है, ट्रायंगल बनाना है, उसका नाम लिखो. क्योंकि आप लोग भी बिना नाम के हो. जब आप पैदा हुए थे तो पहले मम्मा पापा ने क्या किया था? नाम लिखा था आपका. आपको एक नाम दिया था, किस नाम से बुलाएंगे, है ना? वैसे ही जब हम कोई फिगर ड्रॉ करते हैं पहले हम उसका नाम लिखते हैं. हमेशा बिना नाम की कोई फिगर नहीं बनाना. तो कोई भी फिगर बनाओगे, इसमें हमें फिगर का नाम दे दिया है. ट्रायंगल का नाम है PQR. सो फर्स्ट वी राइट PQR. इफ इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन देन यू राइट एनी नेम. PQR, ABC, XYZ, as you wish. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Excuse me, ma'am. Yes. मैम एक्सटीरियर में हम PQR नहीं लिखेंगे. No. PQR is the name of a triangle. So you cannot take that alphabets in anything. Okay? वैसे भी हाँ, वैसे भी PQR जो है वो ट्रायंगल के ऊपर है. वो वर्टेक्स के नाम है. P is a vertex, Q is a vertex. ओके, सो वो एक्सटीरियर नहीं है, वो वर्टेक्स के नाम है. अगर हम उसको लेना चाहें तो हम ऑन द बाउंड्री वाले टाइप में लेंगे, एक्सटीरियर में नहीं लेंगे. एक्सटीरियर में मतलब जो ट्रायंगल से बिल्कुल दूर है उनको लेंगे एक्सटीरियर में. इंटीरियर जो ट्रायंगल के अंदर है, और ऑन द बाउंड्री मतलब जो ट्रायंगल के ऊपर है. ठीक है, तीनों में डिफरेंस ध्यान रखना. ओके मैम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. ये आप बुक में लिखो. क्वेश्चन नंबर 3, क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स. हमने साइड्स की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी. ठीक है, साइड्स में कौन कौन से ट्रायंगल थी? इक्विलेटरल, ठीक है. नाउ इज AB4, BC5, AC8. Which type of triangle is this? Scalene triangle. Yes, very good. A part is scalene. B is AB4, BC4, AC4. Equilateral. Very good, very good. Equilateral. C part is AB8. Scalar. Because all the three sides are different. Yes. B part 9, 9, 14. Isosceles. Very good, very good. Isosceles. So D part is isosceles. Understood all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हमने इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ी होगी तो हमारे क्वेश्चंस फटाफट निकल रहे हैं. जिसको इंट्रोडक्शन समझ में नहीं आएगी वो सोचेगा कि कैसे आएगा, कौन सी ट्रायंगल आएगी, क्यों आएगी, है ना? Yes, ma'am. हाँ. Now question number 4. Now question number 4 is on the basis of angles. On the basis of angles. बुक में करेंगे. एंगल्स में कौन कौन से थे हमारे पास? Right, Obtuse, right angle. Yes. Obtuse, right, or acute. Now, first is 90 degree, 30 degree, 60 degree. Right angle. Why? Why it is right? Because one angle is 90 degree. Yes. Very good. अच्छा. Angle 45, 35, 100. Because इसमें 100 डिग्री है, more than 90 degree means obtuse angle एक है इसमें. 60, 60, 60. Acute Because all the three angles less than 90 degree. Acute angle. Or less than 90 Yes, degree. less than 90 degree. D part 150, 15, 25. Fine. Obtuse angle triangle. Good. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 को अभी आप छोड़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 6 देखो.
क्वेश्चन नंबर 5 ये आपने कॉपी में करना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा लेंथी बताऊंगी बाद में। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ड्रॉ द डायग्राम। योर डायग्राम इज लाइक दैट, दिस इज ऑफ सी। म्यूट योरसेल्फ नाउ। मैम ये नोटबुक पे करना है। बिल्कुल बिल्कुल। Ma'am, sixth question. हाँ क्वेश्चन ओके, डू इन बुक। ओके क्वेश्चन नंबर 6 डू इन बुक्स। पर ध्यान से इधर डायग्राम देखो। आपकी डायग्राम है फर्स्ट पार्ट, इफ C इज द मिड पॉइंट, मीन C आपका मिड पॉइंट आ गया। ध्यान से सुनना, इफ C इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, ये आपका BD है। BD का मिड पॉइंट क्या है? C। नेम द मीडियन ऑफ EBD। EBD, इस ट्रायंगल का मीडियन कौन सा होगा? Ma'am, EC. कौन सा मीडियन होगा? EC. EC, ये वाला मीडियन। EC, EC इज द मीडियन। ये मीडियन हो, क्यों? क्योंकि ये वर्टेक्स से शुरू है। मीडियन कहीं और से शुरू नहीं होता, सिर्फ वर्टेक्स से शुरू होता है। तो E से शुरू हुआ है और C पे आया। ठीक है, सो EC इज योर मीडियन। ठीक है, नेक्स्ट इज B पार्ट। इफ CF इज परपेंडिकुलर टू ED के परपेंडिकुलर है, इट मींस दिस, ये आपका 90 डिग्री का है। परपेंडिकुलर बोल दिया ना, तो मतलब ये 90 डिग्री का है। ये जो साइन लगा ना बेटा, ये वाला, दिस इज साइन ऑफ परपेंडिकुलर। दिस इज साइन ऑफ परपेंडिकुलर। ओके, so if CF is perpendicular on ED, name the altitude of ECD. Ma'am, ECD. CF. CF. Yes, very good. CF is the altitude, because altitude कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। आ गया समझ में? Yes, ma'am. Yes. Okay, good. Now C part. C is if CG is the median of ECD. CG is the median of ECD. ECD इस ट्रायंगल का अगर ये मीडियन है, तो what is the midpoint of ED? G. So G is the midpoint. Very good. Now D part. If EBD is a right angle triangle, EBD मतलब अब इन्होंने बोला BB राइट एंगल ट्रायंगल है, EBD ये वाली लाइन, ये ट्रायंगल, एंगल EBD is a right triangle. Name the two altitudes of EBD. Altitude बताओ दो। EB and BD. EB हो गया, बिकॉज 90 का है। और BD अपनी ट्रायंगल को ऐसे घुमाओगे अपने फोन को उल्टा। ठीक है, उल्टा करके देखो, मतलब आपकी ट्रायंगल अब इस ढंग से बनेगी, ऐसे ऐसे और ऐसे। तो एक आपकी ये लाइन आप परपेंडिकुलर है और एक ये लाइन परपेंडिकुलर है। समझ में आ गई? Yes, ma'am. EB and BD. Is it clear to all? Yes, ma'am. Very good. Yes, ma'am. अब आप ये सारी प्रैक्टिस करोगे? Okay, ma'am. Okay, ma'am. आज प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की। Okay, ma'am. Okay, ma'am. और इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे। Okay, Okay, ma'am. Okay, ma'am. क्वेश्चन नंबर 5 रह गया। क्वेश्चन नंबर 5 विल डू द इन द नेक्स्ट क्लास। Okay, ma'am. Okay, ma'am. ओके Okay, ma'am. Okay, ma'am. क्वेश्चन नंबर 5। ओके बेटा, Thank you, ma'am. ओके Thank you, ma'am. बाय बेटा, बाय बाय बाय। लीव द क्लास नाउ फास्ट। मैम नोटबुक चेकिंग नहीं करनी है। अभी तो चैप्टर शुरू हुआ ना। एंड गर्ल्स प्लीज, जिसने फीस नहीं जमा कराई है प्लीज जमा कराओ फटाफट।
Okay, leave the class fast, fast, beta. Fast, leave your class.